We'll start for we'll wait for 2 more minutes, guys, and then we'll start. One more minute, guys, and we'll start. Did anyone of you try using that lab and try creating? I mean, I got few messages. Few people did it. What about you guys? Did you try doing that? I tried Sohail and I got halfway, but I had to leave it in between. But I'll be completing that today. Okay. So I have not checked that yet, but let them be there. You created and you're not able to browse it. What error? What was the error, Asha? And what did you try to access, by the way? Okay. Srishti could not check steps. I couldn't catch. No, what error are you getting when you try to access that or in container file which you uploaded? Fine, we'll see that. Srishti, I could not check yours also. Let it be. I'll check and delete tonight. Okay, no problem. Okay, so guys, let's start with this. We created a storage account. This is the storage account we were working on. Amit, you also created one, right? Do we have Amit? Amit has not joined. Fine. So we saw these details that what are these? Yes, we'll see that error. But when we do this today, you guys will come to know what was the error and what was the remedy for that. So we do you guys have all of you? Did you install Azure Storage Explorer? And people who are not able to do that last time, please try it now, and it should work. So we saw what is the container within storage account, what is container, what is file share, what is queue, and what is table. We did see this, right? We saw the definition, thoda bahut detail mein dekha hum logon ne. And let's talk about queue first. It's a small topic, and then we'll talk about table. तो ये दोनों खत्म हो जाएगा. I think we have already discussed this, but still we'll do a revision sort of thing. So queue is nothing. When I say queue, a queue is nothing but okay. Queue is nothing but a storage
which can be used. See, now I have got the URL to access this. Here, if I go, I will not be able to do this. I will not be able to access. This is not an image or something where I can go and access this. So I can create a queue and using some programmatic access, some APIs or some codes or some developers, they can use it. Maybe they are creating an application for email, right? Or maybe some logs. It could be anything. So they just want to send messages one by one or data one by one in a queue, and they just want to store it. And whoever the other person is, however they want to access, maybe from here, from some tool, from some uh, from some exchange software, from anywhere they want to access, they can configure it here. They can use this tool. There are a few more configuration, access policies, and few details, and they can access it. And that's all. That's all you need to know about the queue. Being an administrator, you will never ever work on queue. Maximum thing you can do, or a task can come to you, or if an interviewer is asking you that what do you know about the queue, you can say this is a type of storage. And the major work what I have done or what we used to do in queue is creating a queue. Simply, you will get a subscription name, you will get the resource group name, you will get storage account name, and they will just ask you to create a queue. You simply have to go here, and they will also give you the name, that what should be the name. Okay, what should be the name for that queue. So this is what I used to do, you could say, when it comes to queue. कि बस इतना ही काम था मेरा, queues बनाना. ये बना दिया, उसके बाद उस ticket में I will share this link and I'll close my ticket. That's all you need to know about queue. Any doubt, anyone? And you can also add deleting a queue. That is also fine, right? Maybe I'm getting a new queue and I have created a ticket that could you please create a new queue for me with this name under this storage account under this subscription. वो सारी चीजें ticket में होती है already, right? And also delete my old queue with this name, this subscription, it's XYZ वो सब information होगी. So these are the only two tasks you have to talk about when it comes to queue. Yes, guys. Anyone has any doubt in this? Anyone wants to know anything about queue? कि ये पूछा तो क्या बताओगे? Anyone has any question? Please let me know, or we'll finish the queue. Queue का इतना ही पढ़ना है हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं. Clear enough? कि queue के बारे में आपको कितना पढ़ना है? What do you have to read and what do you have to say about queue? If they are asking anything about queue, that's all you have to say, nothing else. I hope it's very easy and very clear, and you guys will not forget it. So you just have to create it and delete it. That's all. That is what we used to do, you can say, with queue. Now it comes to table. Table, guys, you cannot access table using browser. Okay, browser से table नहीं access किया जा सकता. ठीक है. Table can be accessed only using Azure Storage Explorer, the client version. This is the one which you guys installed or I have. एक ये है. To access I'm talking about. ठीक है. इसका utilization, this is a different thing. Access, you can do it using Microsoft Azure Storage Explorer, or you can use storage का browser preview. जो browser वाला view है, this one. It's similar है, यही चीज बस आपको browser में दे रही है. But to have this, you will have to come to, where do you have to come to? You'll have to come to portal. Okay. So portal पे अगर आप किसी को नहीं access देना चाहते हो, ask them to download this and then give them the access. Accesses कैसे देना? We'll see that. Okay, but let's see what is a table first. Table is nothing but a storage. I'm not sure why am I getting this error? Let me check. Because Table that spread. IP is not added to the network. Your IP is not added to the network. Is it yours? No, this is I my think storage it's account, right? Srishti storage. No, No, storage this is my test 53 storage. is, that is Srishti's, I think. No, it's
Okay, let's see, but I guess it is, yeah, I think it's hers, right? So have you guys given to a IP specific? When you created the storage, As per did the you? lab, there was an IP specific practical. Okay, so you completed all the steps? Yeah, we did. Yeah. Great. I haven't checked that yet, so we'll do that. But if you are able to create it and if you are able to follow that diagram properly, trust me, even if I check और उसमें एक दो चीजें गलत भी है, it doesn't matter. The core agenda here is you should be able to read the diagram और उसको आपको follow. This is how the exactly your ticket will come. इसी तरह से आएगा, बस थोड़ा सा डिटेल में आ सकता है, कुछ और चीजें होगी इसमें, ओनर का नाम, टैगिंग वगैरह, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ज्यादा होगी, बट टेक्निकल पार्ट इसका यही रहने वाला है. Okay, so when it comes to table, guys, I can add a table. And here it is. But as I told you, a table cannot be accessed via link. It is not about this is not about access, whether I have access to this or not. I definitely have access, but see, it is not possible to use it in a browser. Same thing if I do here, I will be able to access this in Azure Storage Explorer. Same thing, let's go here and check. So this is the table I created. If you see, the table is empty as of now. I can add entries here. So don't get confused guys, because I have created the table here. यहीं पे बना रहा हूँ, यहीं पर add कर रहा हूँ, तो ये क्या बात हुई, किस काम का हुआ? No, that is not the case. You can create a table here and you can assign this table, align this table with your website. For example, let's say that if I have this website, so I have not done that. Maybe if you guys want to see this, we can do this practical also, but इसमें पूरा एक practical दिन इसी में चला जाएगा. Table बनाने में उतना important है नहीं. But still, if you guys want to see that how it works, we can do this. तो ये जो मेरा यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर जो मेरा वेबसाइट है, इसमें कोई भी यहाँ पर कटा. Now this message, see the moment I sent message, this comes to my email. These are the emails I have. This comes to my email. Okay. But now instead of email, because I'm getting n number of inquiries, so instead of my email, I want this to come to my storage account, or I want this to come to my database. So in that case, maybe I can create a storage account here. यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट मैं बना सकता हूँ और मैं इसको लिंक कर सकता हूँ मेरे इस वेबसाइट से. तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, योर नेम, योर ईमेल, योर फोन नंबर, योर मैसेज, इस तरह से कॉलम्स यहाँ पर अपने आप बन जाएंगे, और मे बी आई कैन क्रिएट समथिंग हियर. और वो हर एंट्री जो मेरी वेबसाइट पे होगी वो यहाँ पर आ जाएगी. एंड देन आई विल हैव मेनी फिल्टर्स एंड एवरीथिंग, जहाँ पे मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ उसको, डेट से फिल्टरिंग कर सकता हूँ कि कौन सी आज की इंक्वायरीज है, AZ104 के लिए कितनी इंक्वायरीज है, कितनी इंक्वायरीज, आई मीन वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई गिव है. यहाँ पे मैंने छोटा सा टेबल बनाया है. लेट्स से मे बी हियर आई कैन मेक अ कॉलम स्टेटिंग लोकेशन, जिसको मैं मैंडेटरी बना दूं. तो यहाँ पर आके आई कैन फिगर इट आउट कि पुणे से कितनी इंक्वायरीज है, मुंबई से कितनी इंक्वायरीज है, राइट. और मुझको और थोड़ा सा डिटेल में चाहिए कि विद इन पुणे चाहिए, तो सो इन सो एरिया से कितने हैं, मगरपट्टा से कितने हैं, बालेवाड़ी से कितना है, कोई पेट एरिया से कितना है. दिस काइंड ऑफ चार्ट एंड दिस काइंड ऑफ डेटाबेस आई कैन हैव. फॉर दैट आई विल रिक्वायर table storage. Are you guys getting it? Anyone who did not understand, let me know. किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, that why do we use it, कि किस तरह से बनेगा, and Yes, I have. yes please. How is it from SQL? SQL में भी same ही होता Sorry, है. SQL अमित आवाज ब्रेक हो रही है. Did you say SQL? Can you type your question, Amit?
Same as SQL. Yes, exactly. This is same as SQL, a lighter version of SQL and a higher version of your Excel file. And you can give this definition literally with these words in your interview. That is completely fine because exactly ऐसा ही है. हाँ. SQL बहुत ज़्यादा डिटेल में है. SQL बहुत ज़्यादा में भी we have Kumail here, he can explain it. SQL में बहुत ज़्यादा डेटा जो है स्ट्रक्चर डेटा होगा और बहुत सारे उसमें हम queries run कर सकते हैं. We can do n number of things. Here also we can run some queries. Let me try doing this. Let me try adding few records for you and then maybe you will understand. Similar to SQL, लेकिन बहुत उसका छोटा सा version. Similar to Excel, लेकिन उसका थोड़ा सा enhanced version. Excel को आप बहुत जल्दी कहीं पर fit नहीं कर सकते हो किसी website के साथ. Here you can do that. Right? So let's say that I am adding a value here. Sorry, Sol, can I add something to it? Yes, please comment. So to Amit's query, SQL is more, it has a more strict schema. So if I enter a value, it has a primary key, right? And then it would have a first name, second name, and whatever the last name, address. This is like a fixed schema. So if none of the details is there, it will not let you insert the data. Whereas these tables are mostly like NoSQL. They don't have any strict schema. Even if you don't put in the last name and you just put in the first name for one entry, and the second entry you just put in the last name and not the first name, it will still allow you to add it. That's the only difference. So this is how it will look, guys. Now इसके बाद जितने भी information आते होंगे, we can have उतनी तरह से you will get those many columns here. So I'm adding this from here just for this practical purpose, but no one wants कि यहीं पर आकर यहीं पर आप बनाओगे और यहीं पर आप entry add करोगे. No, that's not the way it works. एक तो यहाँ से access किया जा सकता है, but यहाँ से भी कोई table को literally इस तरह से कोई access करता नहीं है कि वहां पर जाके ऐड करोगे. इसको हमेशा आप किसी ना किसी वेबसाइट से इंटीग्रेट करते हो. एंड व्हेन आई से आप, यू विल नेवर डू दैट. आप लोगों का काम अगेन अंडरस्टैंडिंग और काम इतना ही काफी है. दिस इज टेबल, दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट इट. आपको बताया जाएगा दिस इज द नेम. उसके आगे उसको यहाँ इस वेबसाइट से इंटीग्रेट करना, किस तरह से यूटिलाइज करना, वो सब जो है डेवलपर का काम होगा. आपसे क्या चीजें मांगी जाएगी, विल सी दैट लेटर. जब हम शेयरिंग और एक्सेस वाला ये करेंगे तब हम देखेंगे कि हमको टेबल जब शेयर करना है तो क्या चीजें दी जाएगी. क्यू जब शेयर करना है, सो व्हाट इन्फॉर्मेशन आर वी शेयरिंग. फाइल शेयर कैसे, फाइल शेयर को ये करना है तो हाउ आर वी डूइंग इट. कंटेनर्स को शेयर करना है तो कैसे करेंगे. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर पूरे के पूरे स्टोरेज अकाउंट को करना है. एंड गाइस, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू. गो इट क्लिक हियर. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि हर स्टोरेज में फाइल शेयर क्यू और टेबल होगा. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यू विल सी अ स्टोरेज अकाउंट जिसमें ना मुझको कंटेनर चाहिए, ना फाइल चाहिए, ना क्यू चाहिए. आई नीड ओनली टेबल्स. यू विल सी दैट ऑल्सो कि जिसमें सिर्फ टेबल होंगे. एंड इफ वन स्टोरेज अकाउंट हैज ओनली टेबल और मुझको उसको किसी से शेयर करना है, इधर आई कैन डू यूजिंग दिस लिंक, राइट. एंड व्हाट अदर ऑप्शन आई हैव, IAM. उसके अलावा what how else can I share it? My storage account has only tables and I want to give complete access. Developers को पूरा access देना है. So what is the best way to share? Correct. Storage Explorer. नहीं, स्टोरेज डेवलपर क्या करेगा? स्टोरेज एक्सप्लोरर एंड यूजर्स के लिए है गाइस. हाँ. स्टोरेज एक्सप्लोरर एक एंड यूजर के लिए है जो कुछ ऑडिट करना चाहता है, जो कुछ ये करना चाहता है. ऐसे किसी यूजर के लिए. एक डेवलपर को तो प्रोग्रामेटिक एक्सेस में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, राइट. वो ये क्या करेगा? Azure Active Directory is also fine, but ultimately वो same चीज तो होगी. Azure Active Directory और IAM यहाँ से ठीक है. Access key, guys. I got one answer already. Access key. जब मेरे storage account में कुछ है ही नहीं और, so मैं रखूंगा क्यों? Why shouldn't I share the access key? Access key share कर देता हूँ और the moment I share access key, वो automatically सारा access उसको programmatic access सब कुछ मिल जाएगा. ये मिल गया कनेक्शन स्ट्रिंग. ये तीन चीजें अगर मैंने शेयर कर दी, तो इसके थ्रू वो Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर से भी यूज कर सकता है, प्रोग्रामेटिक वे में भी यूज कर सकता है और कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाने से किसी वेबसाइट से उसको इंटीग्रेट भी कर सकता है.
Is it clear, guys? Anyone who did not understand this part? And most of the time, even if it is there, while creating the storage account, now try creating one more and see कि आपको क्या क्या option मिलता है उसमें. Well, let's try doing that right away. I hope this is clear to everyone, right? LRS, GRS, RA, GRS. What does this mean? ये सब सबको एकदम clear है, right? Anyone who did not understand that, let me know. ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ये क्या क्या है इसमें. Meanwhile, guys, can you tell me why don't I have archived here? I already shared this with you. Why don't I have archived here? कहाँ पे मिलेगा मुझको archive? Archive is applied to a blob level. Right. I think that's Yes. So once we create that, वहां पर जाके हम लोगों को मिलेगा. Enable blob public access storage. Okay, so somewhere here, let me get that option correctly. I think I'll have to change something, but somewhere here you get an option कि आपको बनाते वक्त क्या क्या बनाना है. I'll have to see if I select this, तब ये सब file only बन रहा है या सब blob बन रहा है, किस तरह से बन रहा है. I'm not sure if this is the option, so do not consider on this one, and we are not even creating. But somewhere here you get an option कि storage account बनाते हुए आप लोगों को क्या क्या चाहिए. While creating, maybe you guys can try to search this. नहीं मिलता है तो we'll do it. कि आप लोगों को क्या क्या बनाना है इसमें. ब्लॉब बनाना है, फाइल शेयर बनाना है, टेबल बनाना है या नहीं बनाना है. And even if it is there, sometimes even if the table and everything is there, they will request you or they will ask you to create separate storage accounts. Separate storage account for let's say एक storage account बनवा लिया आपसे, इसी के नाम में आ जाएगा या किसी तरह से वो नेमिंग कन्वेंशन में ऐसा होगा that you will know कि इसमें सिर्फ टेबल्स है. Maybe T-soft session 52 tables, इस तरह से कोई नाम दे दिया. So you will know कि this storage account will only have tables. तो वहां पर आप सिर्फ टेबल बनाओगे. अगर स्कोप रहता भी है फाइल शेयरिंग का और क्यू का स्कोप भी है, कोई क्यू नहीं बनेगा उसमें, कोई फाइल शेयर नहीं बनेगा. फाइल शेयर के लिए कोई अलग से स्टोरेज अकाउंट. सो दैट इज द रीजन जब आप इसमें जाते हो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो ये 3-4 नहीं दिखते, यहाँ पर थाउजेंड्स में दिखते हैं. यही रीजन होता है कि वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा क्लीन और सेग्रीगेटेड रखते हैं. फॉर अस वाइल प्रैक्टिसिंग दैट इज फाइन, हम सब कुछ एक ही में बनाते हैं, एक ही में इसको डिलीट कर देते हैं एक साथ. दे डोंट डू इट क्योंकि उनके टेबल्स ही इतने सारे बनेंगे कि अगर वो एक स्टोरेज अकाउंट में ये सब रखने लग जाएंगे, टेबल्स एंड क्यू एंड फाइल शेयर, तो परफॉर्मेंस पे भी डिफरेंस होगा, एक्सेस में भी डिफरेंस होगा, डेटा शेयरिंग का भी इशू हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लिमिटेशंस होगी बहुत सारी. ओके, और प्लस अगर गलती से ये स्टोरेज अकाउंट को कुछ हो गया तो इतनी सारी सर्विसेज एक साथ डाउन. दैट इज द मेन रीजन. That is the main. Okay, is it an encryption tab? That is fine, you guys can figure it out. If not found, I will help you with this. So someone says that it is on encryption tab. There you can see कि क्या कौन से वाले आपको फीचर्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए. Okay, so the main reason here is कि मैं सब कुछ अपना एक बकेट में नहीं रखना चाहता हूँ. टेबल भी यहाँ पर ही है, फाइल भी यहाँ पर है, क्यू भी यहाँ पर, कंटेनर भी यहाँ पर, और फॉर सम रीजन ये स्टोरेज अकाउंट जहाँ पर है, लेट्स से आई हैव ओनली टेकन LRS और वहीं पर वो कुछ डेटा सेंटर वगैरह डाउन हो गया, राइट. मेरे पास कोई बैकअप वगैरह भी नहीं है इसका और ये भी नहीं है, तो बहुत ही बड़ा इशू हो जाएगा. दैट इज द मेन रीजन why they keep it separately. Is it clear, guys?
And yes, if one storage account has multiple tables and some team has specifically asked for one table, then you will not share the access key. ठीक है, उस तरह से भी नहीं होगा। एक्सेस की शेयर करने पे आपका पूरा स्टोरेज अकाउंट शेयर हो जाएगा और सारे टेबल्स देखेंगे। इफ देन दैट टाइम यू कैन शेयर दिस लिंक। अब उस लिंक को कैसे यूज करता है, दैट इज अप टू देम। व्हाट इज एक्सेस पॉलिसी, विल सी दिस लेटर। एक्सेस पॉलिसी सब जगह एक ही जैसी अप्लाई होगी, विल सी दिस लेटर। इज इट क्लियर? Is anyone who did not understand? Okay, so now look at the table again. So now if I try to add another entity, what will happen? Let's see. And if I try to repeat the same information, do you think it will allow me to repeat the information, guys? It allowed. Why? Because if you see this partition key and row key, this is different. So these are the two major things. ये आपको repeat करने नहीं देगा. This can be repeated. और यहीं पे थोड़ा बहुत limitation आता है. SQL में बहुत ज्यादा डिटेल में कंट्रोल होता है आपके पास. दिस इज जस्ट एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ योर एक्सेल और इसका चार्जेस भी बहुत ज्यादा कम है. मतलब इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं हो रहा आपको. जो स्टोरेज में आप चार्ज कर रहे हो ना, उसी हाँ, इफ इट इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, वैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट मेजर फंक्शनैलिटी डिफरेंस से ज्यादा ना आप कॉस्ट पे ये करोगे. इफ यू गो टू अज्योर कैलकुलेटर, वहां पर आप इसको देखो, टेबल का कोई अलग से चार्ज नहीं है. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट. लेट मी शो इट टू यू. लेट्स गो देयर एंड शो इट. आई शो इट टू यू. Okay, so one storage account how much is it costing me? $150. इसको we take it in INR 11,000 rupees. ठीक है, इतना मुझको चार्ज हो रहा है. कितना है ये? 100 GB के लिए, ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर. सेम थिंग. नाउ लेट मी चेक फॉर SQL. ठीक है, SQL में आते ही काफी चीजें चेंज हो गई. व्हाट आर कोर्स, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल वाली चीजें. हम SQL को इतना डिटेल में पढ़ भी नहीं रहे. ठीक है, बट समहाउ अगर उसी तरह के एक एवरेज का हम ये लेते हैं, यहाँ पर स्टोरेज का साइज देख लो, उससे काफी कम है. बट इफ यू लुक एट द प्राइस, कहाँ पर वो प्राइस और कहाँ पर ये प्राइस? वाई? बिकॉज SQL पे लाइसेंस का कॉस्ट लगता है. SQL पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है, बहुत सारी चीजें. उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है. इफ यू चेक, मेजर चार्जेस यहाँ पर जो है इसके SQL के लाइसेंसिंग के हैं. ठीक है, स्टोरेज के उतने चार्जेस नहीं है, लाइसेंसिंग के ज्यादा चार्जेस है. सो इफ यू हैव अ वेबसाइट लाइक दिस, जहां पर आपको SQL की जरूरत ही नहीं, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो. लेट्स से आपके ऑफिस का एक इंटरनल छोटा सा वेबसाइट है, और ईयर एंड में आप लोग कोई फंक्शन कर रहे हो. यू जस्ट नीड टू नो कि कितने लोग वेज खाने वाले हैं, कितने नॉन वेज खाएंगे, हु विल बी गोइंग फॉर ड्रिंक्स, हु इज नॉट इन फॉर ड्रिंक्स, किसका क्या बजट है, हु आर कमिंग, हु आर नॉट अटेंडिंग, वेज नॉन वेज. बस इतना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं. वुड यू गो फॉर SQL? व्हाई वुड यू पे? एंड इतना सब ये क्यों करोगे आप, राइट? यू कैन सिंपली यूज दिस टेबल वाला फीचर. यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा. यू कैन रन अ रिपोर्ट एंड you will be done with your task. So this is the reason we use table. Is it clear, guys, to everyone? इससे ज्यादा हम वैसे ही नहीं पढ़ रहे टेबल के बारे में. Anyone has any doubt? यहाँ से कैसे दिखता है एक बार मैं जस्ट बता देता हूँ. वैसे it's almost same. वहां से दिखे और यहाँ से दिखे, that's same thing. You guys also have storage accounts. You have your Azure Storage Explorer. Go and
यूज एक्सेस की जिस भी तरह से आपको एक्सेस करना है, एक्सप्लोर इट थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को पता चले, यू शुड बी एबल टू से समथिंग। So here it is. यहाँ पर क्या, let me try adding one more query. I'll add a query and see. I can add something here new. Okay, I Data can. type. Hmm, Okay, why do you think I got this error? I mean, it already says it clearly. वो थोड़ा बहुत अजीब सा दिख रहा है, but it is in plain English. Can you guys read, and can one of you let me know? Or even if you don't read it, just look at this data, and tell me that why did I get this error? Yes, got few answers. Duplicate entry. फर्स्ट इस एंट्री के बाद जो मैंने एक और एंट्री बनाई थी ना, उसमें आई केप्ट इट ब्लैंक एंड देयर वाजंट एनी ब्लैंक एंट्री, इसलिए वो एंट्री बन गई। नाउ इवन इफ आई कीप इट ब्लैंक नहीं बनेगी, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव ब्लैंक एंट्री। इफ आई कीप इट विथ वन वैल्यू इट वोंट वर्क, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव वन, सो आई हैव टू चेंज दिस वैल्यू। मतलब पूरे डेटा में आई कैन रिपीट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई कैन ऐड डिलीट, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है। सी नाउ दीज आर नल, ये अपने आप एक बन गया, उसने नल की वैल्यू अपने आप ले ली यहाँ पर, बिकॉज while creating these two records I did not have this column. ठीक है, ये सब हो सकता है, but there has to be something which is unique, otherwise वो डेटा काम कैसे करेगा, right? So here the partition key and row keys, ये दो unique values होते हैं, these cannot be repeated। अब मैंने यहाँ पर दो बना ली, new record cannot be there with the same value। So this is what it is। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, स्टैट्स वगैरह देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। दिस फीचर यू डू नॉट गेट हियर, यहाँ पर। ठीक है, मे बी यू हैव क्रिएटेड योर, आपका वेबसाइट वगैरह सब बना लिया, नाउ यू हैव गिवन समवन टू कि बस आप इस पे लॉगिन करो और मुझको एक एक्सेल फाइल वगैरह इसका बना कर दे दो, या अच्छा सा एक रिपोर्ट बना कर दे दो। दैट टाइम यू कैन आस्क देम टू डाउनलोड Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर, और ये कर सकते हो आप। यहाँ पर आई थिंक वी हैव सम डमी डेटास, आप लोगों को भी मिल जाएगी, मेरे नहीं है। अकाउंट बनाते ही आई थिंक ये ऑलरेडी आ जाते हैं। सो इवन इफ यू गाइस क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट, उसमें टेबल वगैरह पर ये कर लो आप, तो आप लोगों को यहाँ पर ये डमी डेटा मिल जाएगा। इट्स यूज डेटा आई फील, इसलिए डाउनलोड लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। सो यू गाइस कैन गो अहेड एंड चेक कि किस तरह से फिल्टर्स लगाया जा सकता है, किस तरह से उसको लुक, किस तरह से आप उसको क्या क्या फिल्टर्स कर सकते हो, किस तरह से उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, स्टैट्स में क्या क्या देख सकते हो, ये सारी चीजें। बट ये आप लोगों का काम नहीं होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। इसके लिए डेटा इंजीनियर्स और डेटा से रिलेटेड जो भी काम है, दे विल डू इट, राइट? बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ टेबल, you can come here and you can see it once। ठीक है, so we are done with queues and table। Now let's do the file sharing। file sharing हम लोगों ने किया है, फिर भी I'll do it today one more time। last time few people were not able to do it। okay, so this is the one, let's try the same। okay, so I just have to copy this। before that, let me log into some virtual machine or any machine।
There's only 3 minutes are left. We'll do this and we'll finish it for today. This is only till 12th August, guys. I have some exams या कुछ ऐसा चल रहा है. So I'm busy in daytime. जैसे ही वो खत्म होता will back to our normal shift and जब से हम 2 सेशंस करेंगे. यहाँ पर भी most of the time I am unable to start at 10 o'clock sharp. कभी ऑफिस मीटिंग में कुछ ना कुछ ये होता रहता है. So we'll make sure it is already connected, by the way. See, this is the disk. Or let's see, maybe that is a different disk. I simply have to copy that and paste it here. And guys, if you are not able to do it, maybe your port 445 it's not open on your okay, can someone tell me why it didn't work? Or you can open port using firewall settings. Do you have which windows are you using, Henty? No, Mac should not give you this problem. What error do you see when you do it on Mac? Anyone who's able to do it successfully on Mac? Who else? Shrishti, were you able to map it? I tried it on Windows. Not on Mac? No. ठीक है, Henty, I'll try it on Mac. I'll see if it works. If it doesn't work, I'll let you know what needs to be done. I have never tried it on Mac. I'll do that. Okay, so the only concept here is you just have to copy it and paste it. यहाँ पर Mac के terminal में Linux के shell पे and Windows के इसमें करना है आप लोगों को PowerShell पे या कहीं पर भी command prompt पे. That's all you have to do. Just copy and paste it. That's all you have to do. इतना हो जाता है. जैसे ही यहाँ पर you will see this one. Now you can create some here it is. If I copy some file here and if I go here, यहाँ पर वो फाइल मुझको दिखनी चाहिए. This is what a sharing is. This is about to finish, guys. If this closes, we are not continuing. It's enough for today. In next lecture, if it is tomorrow, I'll check. We will discuss about and I'll check your practicals. और उसके बाद we'll work on containers. That's all. If you guys did not understand anything, message me, text me, or put it in a group. See you guys tomorrow then. If you have any questions, let me know.